Dr. D.K. Agarwal, let us start with the opening remarks from your side, because you represent the industry. You represent the industry, PSG Chamber of Commerce and Industry. PSG Chamber of Commerce and Industry is a very, very important chamber. Thousands of members. You represent almost all these sectors in the country. MSME Day, World MSME Day, micro, small, medium enterprises is a very important occasion, because India has been going through a very tough period like most nations, but India's MSME has always been, in the real tight spot because of credit issues, because of production issues, because of logistic issues, because of investment issues, because of manpower issues. Dr. D.K. Agarwal, take us through MSMEs. What is the thing that can be done? We've been discussing this over donkey's years, but finally, there is now some light at the end of the tunnel, wherein the government has announced a lot of reforms from the credit perspective for the MSMEs. But is it only about loans, or is it about supporting the industry? Is it only about loan-ly and loan-lay MSME, or is it also about more than lip service for the MSME? What is it from the horse's mouth? Dr. D.K. Agarwal, over to you. Thank you, Abhijit. First of all, I would like to thank you for giving me this platform to express my views. And we have a very distinguished galaxy of speakers today. Amiji, you need to be congratulated that we are celebrating this 27th June as MSME Day, and you never miss such an opportunity to raise the cause for MSME. In fact, the whole purpose of celebrating this MSME Day is that we create awareness about the contribution of MSME, and also in the process, we are able to address, we are able to identify the various difficulties being faced by MSME. Coming to Indian perspective, India is a country which is, I'll say that MSMEs are the backbone of Indian economy. We have almost 6.3 crore. That is the figure which has been officially given, that 6.3 crore MSMEs are there, and they are creating employment of almost 11 crore. And in a country like India, where unemployment is one of the biggest problem, and secondly, we have a lot of inequality of income, and thirdly, we are a rural-based economy where majority of the population lives in Bharat, the rural India. So MSME is the development of MSME can be one of the key factor which can address the issues of inequality of income, which can address the issue of unemployment. And I think a lot has to be done for MSME. I would like to applaud the efforts of government. In last few years, we have seen that a lot has been done in terms of ease of doing business. I think there's some disturbance. No, there is no disturbance. I think the Honorable Minister of State Defense is joining. Lekin aap please continue kariye. Dr. D.K. Agarwal, please continue with your opening remarks, sir. Right. So a lot, I was saying that a lot has been done in last few years in terms of creating ease of doing business, in terms of providing more access of capital to MSMEs, and even during COVID times, emergency credit line and number of steps have been taken. But as you rightly mentioned, is it enough? So I would frankly say, I've been raising the issue of MSME for quite a long period. And during my tenure as PSD president, I think that was a priority. And so there are very good intentions to the government, but I'll say that a lot needs to be done for MSME sector. And, it is, of course, it is the joint responsibility of everybody. But when we see that this is one area which can contribute substantially to the, to address the unemployment problem, and this is something which is a tool to so
sort out the issue of inequality. There is a disparity in the regional. I think this is one thing which can be really looked at very seriously. And MSME faces number of issues. The topmost issue is the funding, the finance. It is not only the availability of finance, it is also pension. Government has been trying their best that finance is available to MSMEs, but at what interest rate it is available, that is something to be looked at. Of 18% to 36%. No enterprise can afford that. So we have to see that funding is available at a very. I would like to welcome Shri Ajay Bharji, honorable friends. We've been joined by Shri Ajay Bhatt. Shri Ajay Bhatt, Bharat ke Raksha Rajya Mantri, and also the Minister of State Tourism. We also have the Rajya Mantri for Ispat and Gramin Vikas Mantralaya, Father Singh Kuliste with us. Vimal Vaklu, former CMD of TCIL. Narendra Ji, former CMD Indian Overseas Bank. Dr. D.K. Agarwal was giving his opening remarks. He is former president of the PSG Chamber of Commerce. And Dr. D.K. Agarwal is also the MD of the SMC Global Securities. Now, can I go over to Sri Narendra Ji? Narendra Ji, can you hear me? Yeah. Narendra Ji, your opening remarks on MSME Day, former CMD of Indian Overseas Bank, banking perspective, MSMEs, are we only indulging in lip service or is it loan lay MSME? MSME को लोन देने की बात करते हैं पर लिविंग देम लोनली, लोन ले के नाम से लोनली यानी कि अकेला छोड़ दिया जा रहा है. Yeah. At the outset, I also congratulate all MSME units on the occasion of Global MSME Day, and also I recognize and my greetings to Jay Bhatt, Dr. D.K. Agarwal, and all others on the as a panelist here. And our Agarwal ji clearly brought that there is a lot to be done for the MSME sector, and every association, industry association, as well as the government and all the stakeholders will have to work in a collaboration and partnership approach to make available the various benefits made available through the Ministry of what you call MSME to the grassroots level. There are quite a lot of schemes which are done by the government, marketing, whether it is in product development, it is in the research and development, in providing technological support, and even in terms of clusters exclusively done for that, and various, not necessarily I'm talking of incentives, the enabling what you call environment created by the ministry, all are not able to get the full benefits. And a few who are quite aware are also able to get. Take, for example, technological upgradation. Today, artificial intelligence, machine learning, robotics, industry 4, that is needed for the MSME. But the fact is that few can only afford to utilize or make that much investment. Now, can that be done only through the bank loan? Bank loan will be becoming a costlier for them. So my suggestion is in each of the cluster, why the government and maybe even corporates can make available that common facility of technology in terms of this new technology, make available to the MSME, and with that MSME can give a part of the earnings to as a charges instead of their own going for technology. So one area Amit ji bataya that banks have been helping the MSME. The handholdings are done by the MSME only, whether during the COVID or during the any you see,
Another is restructure only for COVID, which all the public sector banks and even other banks have made available. Then there was a scheme done by the ministry where more than 3 lakh crore, later it became another 1.5 lakh crores, and all the sectors were added, including a bigger industry like KV Commerce Committee recommendation sectors were also added. So yeah, I will be brief. I will be brief. Yeah. Sir, Yeah, I will be brief. Opening So remarks right now. the Just the opening remarks, because the opening minister. remark only. Oh, yeah, what that only. That only. Okay, I will finish it up because are there. Today, where they are giving equity, that scheme should be made, and around 50,000 crores, which should be made available to the MSME, so that they can bear this additional debt. Because unless there is a corresponding improvement in the economy, and with the commodity price going, inflation going up, interest rate going up, it will find difficult for the MSME to service this account now with the additional loan they have taken. So there is a need for additional capital with this. But as you rightly said, there is another 25 lakh crores of requirement of MSME, which are outside the purview of the bank, where there is a lot of effort to go and reach to them. And that's where today with the GST and other what you call PAN and other things are all getting integrated. With this, the financial information and other whatever operations are made available. So the banks have to reinvent to find a simple way of funding them without asking for a lot of papers. I think today through the fintech and the NBFC and leading public sector bank like Bank of Baroda, Punjab National Bank or State Bank, Union Bank, they have also adopted online lending and they have also collaborated. I think we will find days where MSMEs will become more and more formalized and their credit requirements will be taken care by the bank. Thank you, Amit ji. Narendra ji, thank you for your opening remarks. Honorable Minister of State, Defence and Tourism, can I have your camera on, please, sir? Ajay Bhatt ji, yeah. Namaskar, sir. Mantri ji, namaskar. Mantri ji, namaskar. मेरी आवाज आ रही क्या? नमस्कार बिल्कुल आ रही है, सबको। मंत्री जी, नमस्कार। डिफेंस के बड़े बड़े जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, करीबन 9 बड़ी संस्थाएं हैं, जिसमें काफी महारत्ना, नवरत्ना, मणिरत्नास भी हैं, और इसके अलावा काफी सारे और भी उद्योग है, लघु उद्योग है जो डिफेंस के हैं, जो एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें बताएं कि ये एमएसएमई दिवस पे आपकी जो डिफेंस की जो नीति है, जो मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है भारत सरकार की, उसमें एमएसएमई का कितना बड़ा रोल है मेक इन इंडिया पे, और आपकी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियां ये एमएसएमई के साथ जुड़ के कैसे इस देश को आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की तरफ और अग्रसर कर सकती है। देखिए, मैं समझता हूं कि कुलस्ते जी अभी उपस्थित नहीं हैं, भानु प्रताप वर्मा जी भी नहीं होंगे, और गोयनका साहब और आप कई लोग, मेरा परिचय अभी वैसे नहीं हुआ है। मैं जल्दीबाजी में बहुत देर से इसको हम कोशिश कर रहे थे मिलने की, तो फिर अभी हमने दूसरी जगह आके ये आपसे वार्ता करने की सोची, तो ये सफलता मिल गई, हम एक दूसरे को मिल पा रहे हैं। एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल प्रधानमंत्री जी ने तो एमएसएमई को आगे जाने की नहीं है, वहां तो है ही डिफेंस में, और जगह भी डिफेंस में ही नहीं और जगह भी एमएसएमई एक किसे बिल्कुल सपोर्ट दे रही है। आज अगर आप देखेंगे तो 13,000 से ज्यादा एमएसएमई इस समय देश में है, बल्कि ज्यादा ही होंगे, इनका एग्जैक्ट फिगर इतना पक्का पता है कि 13,000 से अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र में एमएसएमई का बहुत बड़ा उपयोग है, और इसको आगे ले जाने में हमारे सारे अभियान, जैसे हमारे अभियान में आत्मनिर्भर भारत है, रक्षा मंत्रालय ने कुल 310 वस्तुओं को आज आपको पता है कि
स्वदेशी की सूची में रख दिया है और 3 बार हमने सूची निकाली है। अब इनका निर्माण हमको करना है। अब बनाएंगे कहाँ से? बनाने वाले कौन है, इनका निर्माण करने वाले कौन है? MSME। यद्यपि हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को अपना डिसेंट्रलाइज कर दिया है, आप जानते हैं, सभी विद्वान हैं। 41 यूनिट को तोड़ के 7 में हमने DPSC बना दी, 7 DPSC। आपको पता होगा बड़ा बवाल भी हुआ था जब स्टार्टिंग करी, लोगों को गलतफहमी भी थी, बल्कि हम लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से बताया कि इसमें कहीं चिंता करने की बात नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। और उनको ये कहा आपकी जो DPSUs हैं तो हमारी, वो हमने बनाया ऑर्डिनेंस को तोड़ के, रक्षा मंत्रालय ने, लेकिन आपको भी प्रतियोगिता करनी होगी, यानी कि कंपटीशन आपको करना होगा। अगर आपका सामान अच्छा है, आपसे खरीदेंगे, आपका सामान अच्छा नहीं है तो MSME या दूसरे से खरीदेंगे, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर, स्वदेशीकरण की ओर चल रहे हैं। और MSME ही आज ऐसी चीजें हैं जो हमको कई क्षेत्रों में ऊपर उठा रही हैं। हर जगह पर हमारी कोई भी चीज को हम बना रहे हैं तो उसमें MSME उसका निर्माण करती है, हम उसको कनेक्ट करते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई गोली बना रहा है, कोई बारूद बना रहा है, इंजन तो अभी बनना प्रारंभ नहीं हो रहा, उस पर भी शोध चलने लग गया है, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। हर तरफ से हम लोग छोटी छोटी चीजें जो बाहर से मंगाते थे, वो अब हम यहाँ बनाने लगे, छोटी और बड़ी भी। और आपको पता होगा एक बड़ी मात्रा में हम लोग निर्यातक भी बन गए। 80 देशों को हम इस समय निर्यात कर रहे हैं। सिपरी की एक सर्वे हुई है, आप सब विद्वान हैं, सिपरी जानते हैं, 2020 में। तो उसमें ये कहा गया है, उसमें पूछा गया, जो सर्वे हुई, पूछा, इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं होती हैं ये, तो कोई भारत की तो है नहीं, तो पूछा क्या उनसे, उन्होंने कौन से ऐसे देश हैं, कितने देश हैं जो आज निर्यातक बन गए हैं, एक्सपोर्टर बन गए हैं, टॉप देश कौन कौन है। तो पहली बार भारत का नाम उसमें आया, हमारे देश का नाम पहली बार आया, इससे पहले कभी नहीं आया। अभी हमें आयात करने की आवश्यकता पड़ती है, कई जगह ऐसी हैं कि उन चीजों पर अभी हमको महारत हासिल करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक और हमारी कई हमारे और भी लोग हैं जो इस पर जुड़े हुए हैं कि किस तरह से हम इन चीजों को बनाएं। जैसे कई, अभी बोलना ठीक नहीं है क्या क्या चीज हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ चीज लानी ही पड़ेंगी, लेकिन शोध चल रहा है। मुझे लगता है कि हम ग्लोबल लीडर बनने की तरफ हैं। और बजट के मामले में मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ा बजट हमारा है। MSME के लिए हमने फिक्स पैसा रख दिया है, आपको पता ही होगा, एक लमसम अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट हमने रखा है। मैंने अभी आंकड़े निकाले थे, इसका 10,000 करोड़ रुपए हमने इसमें निर्धारित किया है फंडिंग के लिए, MSME के लिए। अब आप देख लीजिए, चाहे डिफेंस हो या एरोस्पेस हो, इसमें तो हम सीधे हम लोग करेंगे MOD से। अन्य चीजों में भी MSME को और भी कई चीजें बनानी है, इसके अलावा भी साजो सामान बनाना है देश के लिए, तो उनसे ही खरीदने की पॉलिसी हमारे यहाँ बन रही है, और साथ में वो निर्यात भी करेंगे। अभी आपने देखा होगा, हमको कई ऐसे रॉकेट से हैं, मिसाइल से है, जो बाहर के लोग हमसे खरीदने लगे हैं, कई चीजें जो चीजें हम बना रहे हैं। तो MSME मैंने कहा कि इसका मेजर रोल है हमारे यहाँ भारत। आप जो सब कहते हैं कि हम स्वदेशीकरण कैसे करें चीजों का, और आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। इस समय तक हमने जो अपनी लिस्ट में बनाया है, 310 आइटम ऐसे कर दिए हैं जिसको अब हम नहीं खरीदेंगे, और जिसमें करोड़ रुपए हम आज बचाने जा रहे हैं। पहले ध्यान ही नहीं आया किसी को, जो हम यहाँ बना सकते थे हम बाहर बना रहे हैं। अभी आपने देखा, हमारा जो मिसाइल थी, पहली बार हमने अपने ही हेलीकॉप्टर से लक्ष्य को भेज दिया, उससे अपने यहाँ बनाया। तो यही तो अपना जो भी है आत्मनिर्भरता है,
इसी तरह से मैं कई प्लांट को देखने गया, बाहर मंगा रहे हैं लोग, गोलियां बन रही हैं, 5-5 आप आर्मी वाले होंगे कई लोग, जब बनती है फैक्ट्री में तो इतनी जगहों से क्रॉस होती है, इतना चेक होता है, अगर गलत है किसी के अंदर तो वो उसको धक्का मार के बाहर फेंक देता है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि ये गलत है, दोबारा से उसको फिर जांच होती है। विदेश भी जा रहा, हमारे पास भी आ रहा है, और बहुत करोड़ों का हमको मिल भी गया है। इसमें हमारी MSME है आज लगी हुई है, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा किस तरह से, जो मैंने कहा 2-3 बातें हैं। एक तो हम अपने स्वदेशीकरण में अपने यहाँ निर्माण कर रहे हैं, अपनी चीजें बनाने लग गए, जिससे हमारी साख बन गई है पूरे विश्व में कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा, जिसको नंग धड़ंग बाबाओं का देश, मांगने वालों का देश कहते थे, आज देने वालों का देश हो गया, क्योंकि आज हम 80 से ज्यादा लोगों को निर्यात कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी बात ये। दूसरी ये है कि MSME ऐसा सेक्टर है कि वो लोगों को रोजगार भी दे रहा है, चाहे छोटे लेवल पर हो बड़े लेवल पर हो। और अगर आपने उद्योग किया है, अपने लिए खोला है, स्वदेशीकरण करेंगे, हम इससे अपनी आजीविका भी चलाएंगे, तो फिर अगर आपकी व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कैसे चलाएंगे आप? आपकी व्यवस्था भी ठीक होनी है, वो भी तो छोटा उद्योग है ही, चाहे हम उसको MSME में कुछ भी कहें, उद्योगी तो है हमारा, निर्माण कर रहा है, छोटे लेवल पर करे बड़े लेवल पर करे, उसको पोषण देना, उसकी सुरक्षा करना, उसके आर्थिक हितों की रक्षा करना, ये भी हमारा काम है, उसको बखूबी हम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि MSME हमारी आर्थिक रीढ़ है। मैंने आज देखा था इसके बारे में, अब आप जैसे देश में हमने अभी रक्षा के डिफेंस के कॉरिडोर बनाए, यूपी में है, तमिलनाडु में है, और आपको पता होगा कि निजी क्षेत्र के लोगों ने 84 में एक समझौता कर लिया है, 41 में किया है, हमारे समझौते हो रहे हैं उनके साथ, जिसमें MSMEs भी हैं। नहीं है, साथ होती है और वो कोई स्टैंडर्ड में कम नहीं होती हैं, सारी चीजें बना के देती हैं, एक किस्म से सपोर्ट है, वो सपोर्टर